कृष्ण ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 7 ब्रह्मणस्तपः वैकुण्ठ दर्शनं च। एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं। यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकारविहसन् नानासिसृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमाण स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावध्वं जगदां पदे तपतपेत् एवं हि वैहायसीं वाणीं येन मशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम्। कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमभ्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमाततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेघाद्भुतम्। माया यत्र गदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्वसमुखां भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो। यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातद्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्ततदा विदोन्नतपदां दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत्। नानादिव्यवधूजनैरभिवृतां विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतयां विद्योतिदाशान्तरां त्वत्पादाम्बुजशौरभैककुतुकाल् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवा दत्ते पदं देहि मे। तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनात्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात् या कल्पदी प्राकृती श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमने छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षतविदस्तत्ते विभो पातु मे। कालाम्बोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसित स्यन्दप्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत्। दृष्ट्वा सम्पृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन्। जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय
द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्ट तं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमदतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोतस्ते भविता न सर्गविधिर्बन्धोऽभिसञ्जायते इत्याभाष्य इरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोलागताम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द राधे कृष्ण।